Dear students, in this topic we shall discuss the visual pigments and their photochemistry. The visual receptor cells can detect only a part of the spectrum of electromagnetic radiations. ये जो electromagnetic radiations हैं इनकी बहुत सारी types हैं और इनका एक बड़ा high spectrum है. इसमें से एक थोड़ा सा portion है जो कि विजुअल रिसेप्टर सेल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम देखना कहते हैं और ये देख सकते हैं. The various wavelengths within the spectrum of visible light are perceived as different colors. जो चीज विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें नजर आती है वो डिफरेंट कलर्स में नजर आती है. तो विजिबल स्पेक्ट्रम हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस कलर्स. The visible spectrum for human eyes lies between the wavelengths of 400 to 740 nanometers. Dear students, the vision of an animal depends on the presence of visual pigments. These pigments can absorb light and transduce the photons of light into the chemical energy and electrical signals. The light absorbance capacity of these visual pigments is due to the presence of alternating single and double bonds in a carbon chain or a carbon ring. In a photoreceptor cell, a quantum of radiation is absorbed by the photopigment, results in cis-trans configuration change in one double bond. This cis-trans change in the double bond means कि एक डबल बॉन्ड की जो डायरेक्शन और एंगल है वो चेंज हो जाता है. अगर एक डबल बॉन्ड इस तरह से पड़ा हुआ है तो ये डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज करेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, रहेगा वहीं पे डबल बॉन्ड ही रहता है. बट दिस इज कॉल्ड सिस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. दिस चेंज इज ड्यू टू द लाइट एंड starts a cascade of chemical reactions which result in the transduction of light. Dear students, the visual pigment in the cells of rods or rod cells is called rhodopsin. The pigments in cone cells are color pigments and are called photopsins. All these visual pigments have only slightly different compositions. Yes, students, now we shall see the chemistry of rhodopsin. A rhodopsin molecule consists of two major components. One is the opsin protein, and second is the light absorbing molecule, which may be retinal or 3-dehydroretinal. Both these are carotenoid pigments derived from vitamin A. These carotenoid pigments, the carotenoid pigment retinal is derived from vitamin A1, while 3-dehydroretinal is derived from vitamin A2. Rhodopsin protein, in addition to these two components, protein also is conjugated with an oligosaccharide chain of 6 sugars and a variable number of phospholipid molecules, which may be 30 or more phospholipid molecules. The opsin, along with the phospholipids and oligosaccharides,
is bound to the photoreceptor membrane as an integral part. जो photoreceptor cell है उसमें ये वाली प्रोटीन अपने सारे allies के साथ इंटेग्रल पार्ट के तौर पर मौजूद होती है. However, जो कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं, रेटिनॉल और 3-डिहाइड्रोरेटिनॉल, ये लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से ये या तो अटैच होते हैं या इस रोडोप्सिन के मॉलिक्यूल से डिटैच होते हैं.